दूसरा ये, since मैंने सेशन से पहले ही बता दिया था कि we are team and the information you are sharing can be very personal. So जितने लोग इस कमरे के अंदर हैं, it's like understood already कि आप like बाहर कहीं नहीं बता सकते, ठीक है? दूसरा ये कि keep track of time, you have like 2 minutes, हर बंदे के पास 2 मिनट हैं, और I think we should start. And start करें. When you start calling. Only Babar and Malakram. Okay, so over here is Umar Ikram. I'm really bad with names, so I think that's the name, right? Umar Ikram. So I'll just be giving a background check on what Umar Ikram is, or who Umar Ikram is. He is a philanthropist, or aspires to be a philanthropist, hopeless romantic, wants to work for a social cause, teaching and all that. But there's some other things that you need to know about him. He has a drinking problem. It's a lot of water. He's a hopeless romantic, as I've already told. He has 5 failed marriages, and then he has a gambling debt. Now, some of this might be not true, and I think I will be penalized for that because I'm fasting. Now I should start. Thank you. Okay, so as Oneeb has already pointed out, my name is Umar, and this is Oneeb. So basically, he is Oneeb. Most people get this wrong at the first time. I did as well. And basically, Oneeb wants to grow up and move to Tibet, up in the mountains, high up in the mountains, and get high with the monks. It's high literally, because mountains are high, you know. So that's what Oneeb is, and he is doing CS, the boring part. He's doing CS, and basically he's a nice guy. That's it. Shahzeeb and Neha. My name is Shahzeeb and she is Neha. तो ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सच्ची और आईएस और दूसरों का ख्याल करने वाली है। उसके अलावा इनमें क्वालिटी है जो है शेयरिंग, ठीक है? उसमें जो है वो हर किसी के साथ मेरा ख्याल है ज़्यादा शेयरिंग नहीं करती, पर जो अपनी फ्रेंड है उनके साथ हमेशा शेयरिंग करती हैं। इससे जो है वो ये अंदाज़ा होता है कि ये एक अच्छी दोस्त बन सकती है। नाम शाहज़ेब, ये सबसे छोटे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत सारा काम करते हैं। ये अकेडमी चलाते हैं और ये ई कर रहे हैं क्योंकि ई इज़ अ गुड नेम। सिर्फ इसलिए क्योंकि खानदान वालों को दिखाना है कि ई कर रहा होगा भाई, प्लस स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। और ये वो लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि बच्चों को सिखाते हैं, तो ये चाहते हैं कि मैं बच्चों से और सीखूं और मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ। ये नहीं कि बस मैं आया और समय टाइम में टाइम पास किया, चलो मेरे दिन गुजर गए, चलो घर में नहीं बैठा। तो ही वांट्स टू लर्न फ्री। दैट्स ऑल। Nairoz Afzal and Sundar Javed. सुंदर जावेद के बारे में मैं आपको जो एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत बड़ी प्लान फॉलोवर है। ये सऊदीया में 2002 में पाकिस्तान आई थी सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान्स को फॉलो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बेसिकली। ये एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और जब इन्हें साइकोलॉजी में एडमिशन नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने क्या था
जाती है बेसिकली अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक छोटी करी जा रही है। तो इन्होंने उसको फॉलो अप करनी है फिलहाल, और रिसेंटली इनके 6 सेमेस्टर्स ओवर हो चुके हैं, और ये इनका एक प्रोजेक्ट था एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, जिसमें ये करियर काउंसलिंग और परफॉर्मेंस बिल्डअप्स और एक और चीज़ उसे भी कर रहे हैं साथ साथ। और दूसरा ये कि ये लोगों के साथ इंटरेक्ट अपनी तरफ से तो ये सोचते हैं कि मैं नहीं करती, लेकिन अभी 20 मिनट में इन्होंने मुझे पता नहीं अभी कौन सारी इंफॉर्मेशन सारा कुछ मैंने निकाल लिया है। That's all. This is Emoze and one line is suffice to sum up his personality. He's a very ambitious person. माशाल्लाह जितनी देर मैंने इनसे बात की है, इनको नहीं फील होता कि ये ambitious है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी ambitious है। अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक मेन प्रोजेक्ट जो इनका है जिसको ये अपने फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, इट्स इलेक्ट्रो बैंक, और जिसमें आपको आपके आप अपनी प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में सॉल्व करते हो, जिसमें से एक मेन चीज़ इन्होंने मुझे बताई कि यू आर एट द पोजीशन कि आपके मोबाइल की या किसी चीज़ की बैटरी ख़त्म हो गई है और आपके पास कोई प्लग वगैरह नहीं है चार्ज करने को, तो ये इस तरह का बैग आप कह सकते हैं कि बना रहे हैं कि आप जिसके अंदर प्लग इन करके अपना सेल वगैरह या जो भी चीज़ है वो चार्ज कर सकते हैं। और इनके साथ एक बैठक हो जाती है कि जब भी वेकेशन प्लान करते हैं तो किसी न किसी फ्रेंड का कोई इशू हो जाता है या कोई ना कोई चीज़ कर जाता है, तो उनका वेकेशन का प्लान नहीं जो है वो कभी कंप्लीट Lina and Zishan. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज के लिए ज़ीशान ये नहीं, ज़ीशान मैं हूँ। ऑल्दो आई नो दैट आई डोंट लाइक लुक लाइक हिम, बट आज के लिए ज़ीशान मैं हूँ। ज़ीशान जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान से है और ये फार से इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इनको खुद को शौक नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, सिर्फ पापा की फोर्स करने पे कर रहे हैं। उसके बाद इनका इंटरमीडिएट जो है वो पंजाब कॉलेज से है, जहाँ पे इनको मुर्गा बनाया गया था। उसके अलावा इनका जो अगर इनको पता चले कि 1 साल बाद इनकी डेथ, 1 मंथ बाद इनकी डेथ हो जाएगी, तो सरप्राइजिंगली ये पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे, ना कोई चैरिटी का काम करेंगे, लेकिन सिर्फ उस 1 महीने में ये चैरिटी करेंगे जिससे इनको खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये अलीना, पहली बार जब मैंने देखा कि ग्रुप डिस्कशन में ये मेरे साथ होंगी, मैंने देखा इनकी पर्सनैलिटी को, मुझे फील हुआ कि ये ज़रूर किसी बिजनेस फील्ड में ही होंगी, क्योंकि इनका फेस देख में शक पड़ा था कि यार ये इंजीनियरिंग की भी इंटरेस्ट हो सकती है, क्योंकि बड़े भोले बच्चे होते हैं इंजीनियर के मार्क्स मार्क्स। तो मैंने अपने से इंटरेक्शन से करके पूछा कि आपका कॉलेज कौन सा है और यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बताया कि मैं कनेड से पढ़ी हुई। तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा कनेड में तो वैसे ही हज़ार वाले बच्चे जाते हैं, वाकई इंजीनियरिंग फील्ड की होंगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप कौन से फील्ड से पढ़ी हुई और क्या आपके कोर्सेज हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने मैट्रिक किया है कराची से। तो मैं शौक हो गया, अच्छा आप कराची की हैं, आप लाहौर की लगती हैं देख के। तो इन्होंने बेसिकली अपना बचपन और स्कूलिंग लाइफ सारी कराची में गुजारी, वहाँ पर ये 16 साल रही और आफ्टर 16 ईयर्स ये लाहौर में आई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटरोला था, पिंक कलर था, जिन्होंने कराची में लिया था। तो आफ्टर 16 ईयर्स ये कराची में रहने के बाद इनकी फैमिली सारी यहाँ पर शिफ्ट हो गई, BHA में यहाँ पर रहती हैं, और इन्होंने अपनी स्कूलिंग वगैरह वहाँ से करने के बाद यहाँ पर कनेड में एडमिशन लिया। पंजाब कॉलेज में भी ये गई थी, लेकिन वहाँ पर एक्सपीरियंस उनका बहुत बुरा, जो रिसेप्शन थी वहाँ पर बड़ा खड़ूस सा बंदा बैठा हुआ था, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, तो इन्होंने उनसे इम्प्रेस नहीं हुई, कहा चलो छोड़ो पंजाब कॉलेज में नहीं जाना। फिर ये गई कनेड में, यहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया और माशाल्लाह इनके 900+ मार्क्स हैं, बहुत पढ़ने वाली बच्ची थी, मैंने सही बताया था। और इन्होंने अपना आर्ट्स फील्ड में क्लासेस ली वहाँ पे, और फिर अब FC कॉलेज से ये ग्रेजुएशन कर रही है, साइकोलॉजी और मैथ कम्युनिकेशन के अंदर। और इनका एक ड्रीम है, तो मैंने पूछा कि अगर आपके कोई कमी ना मिले और आपको पता चल जाए कि 1 मंथ है आपके पास और आप इसमें चले जाएंगे, क्या करेंगे? उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि मैं वो सारी जगह देखना चाहूँगी जो दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखी। Aksa and Tahir. इनका नाम ताहिर शाद है, आरटीयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं।
गई फील्ड CS में आ गई, ठीक है। अब इनका जो मेन मोटिव ये है कि मैं किस तरह से बस पार कर दूँ इसको और उसके बाद मैं अपना जो मेन फोकस है उस पर मैं कंटिन्यू कर सकूँ। और मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आप सपोज करें कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे हैं आप, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि आप जो आपकी अपनी पास की ज़िंदगी में कुछ आपने ऐसा कर लिया हो जो आपको उस स्टेज पे जाके आपको बड़ा प्राउड फील हो रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक उसका आंसर दिया, वो ये था कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया में एक दफ़ा विजिट करना चाहती हूँ। और इन्होंने ये बताया कि मेरा शौक ये है कि मैं एक ऐसा हो, लेकिन हो नहीं पाता कि मैं इनविजिबल हो जाऊँ और जो लोग मैं लोगों को देख पाऊँ वो उनका करेक्टर वगैरह क्या है, किस तरह काम कर रहे हैं, उनका माइंड रीडिंग कर सकूँ मैं। That's it. सहमत इकबाल एंड हमजा इत्तेफाक। सहमत है। हमजा इत्तेफाक के साथ आज मुझे बात करने का शौक हुआ, तो काफ़ी बातें मैंने इनसे पूछी। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये ITU से पढ़े हैं, बल्कि पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और BScs कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी इनके अंदर कि मैंने इनसे वजह पूछी कि ये CS के अंदर क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि इनके कज़न्स ने इनको फोर्स किया था। तो मैं देख के एक बार सुन के हैरान हो गया कि कज़न भी फोर्स कर सकते हैं फील्ड चूज़ करने के लिए। तो उसके बाद फिर स्पोर्ट्स पे बात आई, तो मैंने इनसे ज़रा फुटबॉल के रिलेटेड कुछ पूछा। तो फेवरेट प्लेयर पूछने में उन्होंने बताया कि इनको एक गंजा सा प्लेयर पसंद है जो कि नीदरलैंड से है। तो काफ़ी सोचने के बाद मेरे जहन में और दोस्तों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि वो प्लेयर जो गंजा सा था वो रॉबिन था। और इसके अलावा आर्मी में जाने का इनका बहुत शौक था, पूरा नहीं हुआ तो गेम्स खेल के पूरा करते हैं शौक। आर्मी वाले गेम्स इनको बहुत पसंद है। और उसके अलावा एक और बात से पूछी कि फेवरेट जगह किसी अगर अपनी ज़िंदगी में जाना पसंद करें, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कहते हैं कि वो जो धीरे धीरे सॉन्ग के जो जगह है वहाँ बस ये मैं उसके बाद सारी बातें सुनने के बाद मैंने उसको कहा कि भाई तुझे नींद की ज़रूरत है। मेरा नाम सरमद इकबाल खान है और मैं कपूर से हूँ और मेरा ड्रीम था कि मैं लंदन में नहीं आ सका। मैं फिर किसी अब मैं आ गया हूँ और मैं किसी के कहने पे नहीं और किसी के सपोर्ट करने पर बस MCS कर रहा हूँ और किसी चीज़ का शौक नहीं है। एक चीज़ का शौक था GCU में जाने का, वो मैं चला गया और मेरा शौक है कि मैं कभी अमेरिका जाऊँ और वहाँ जाके लॉस एंजल्स वगैरह में पोकर वगैरह खेलूँ और ऑल दैट। और मेरी बहुत ही फ्रेंड्स हैं और लियोनार्डो डिकैप्रियो मुझे पसंद है और मेसी फेवरेट है। ज़ारा एंड रमीशा। बहुत कुछ सीखा है। इसमें मुझे बहुत चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ। मैंने पूछा था बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे क्या है आपके लिए, तो फिर उसने मुझे बताया द वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे इज व्हेन आई वेक अप फॉर सैरी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेक अप और बहुत मुश्किल से उठती हूँ और फिर बस ये फाइट होती है कि उठूँ ना उठूँ, फिर मैं तारीफ सोती हूँ, तो फिर वो सबसे बुरा पार्ट होता है दिन का। लेकिन सबसे मज़े का पार्ट स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं जाग जाती हूँ। क्यों मैं जागती हूँ? क्योंकि अब सबसे पहले मैं फ़ौरन ही जब जाती हूँ कमरे के अंदर और AC ऑन करती हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि मामा को ना शक हो जाएगा, तो मामा आती है थोड़ी देर बाद और AC ऑन हो जाता है और फिर दोबारा से मैं AC ऑन करती थी, AC ऑन करने के बाहर जाती हैं और बस यही मैं करती रहती हूँ और मुझे जाग आ जाता है। तो बाकी जो उसने मुझे बताया था, मैंने उससे पूछा था सेल्फी के लिए बेस्ट फिल्टर क्या दिखता है, तो फिर वो क्या है
और जो लेता है वो भी नहीं अच्छे लगते। तो चलो कुछ भी होता। और फिर उसने मुझे बताया कि उसने सिर्फ एक लेटर लिखा है, लाइक रियल लेटर, स्नेल लेटर जो होता है। तो फिर वो उसने लिखा, और जो लिखा था जब मैं छोटी थी उसने क्या लिखा था, अपनी जो मासी है उससे उसने लेटर लिखा था, लव लेटर फ्रॉम अ सेलिब्रिटी। और जो है उनको पता चल गया था कि ऑब्वियसली सेलिब्रिटी से नहीं था। तो शी ट्राइड टू फूल हर, बट शी couldn't. ये बहुत इनोवेटर लड़की है। इससे मैंने सवाल किया था कि मैं इसके अकेडमी में थी, मगर आज मुझे पता चला इसने मुझे कभी नोट ही नहीं किया था। तो मैंने इससे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो अब गणेशा का जवाब ये था कि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, मगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों से बातें करके और उनसे मिलके उनको भूल जाती हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने इससे ये पूछा था कि ऐसे कुकिंग सच में पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इस बार। तो इसका जवाब ये था कि हाँ इसे बहुत पसंद है, और उसकी वजह एक शो है मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, और उसमें जो उसमें ड्रामे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी जो काम करते हैं वो उसे बहुत पसंद है। और इसके जरिए इसने बहुत ज़्यादा इनोवेशन सीखी है कि कम टाइम में कम चीज़ों से इसे क्या बनाना है, क्या और कैसे बना सकती है। Next is Ali and Abdullah. सबसे चीज़ है, मैंने इससे पूछा कि ये फास्ट में क्यों गए, कहते सिर्फ एक वजह है, नाम उसमें नहीं हुआ। और दूसरा है इसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है, सोना। मैंने जितनी उससे बात की एंड वो उसको कंक्लूजन ये था, यार मैं सोना चाहता हूँ बस। कहता मुझे एक बेड दे दो और जो है ना मुझे आप 1000 साल दे दो, आप 1000 साल बाद मैं आपको नहीं मिलूँगा, और जो है इसका जो है सीक्रेट बात यह है कि रात को ही जो है ना बेड में घूमता है सोते हुए। और जो है इसका है कि एक इसकी और सीक्रेट बात है कि छत से छलांग मारने लगा देखते मारने लगा था छलांग। और जो है ये बात करते करते थोड़ा सो गया था। बाकी हमने इस तरह कि मैं रैपिड फायर किया था तो 3 साल मैंने से पूछे थे स्नेक से जवाब दिया था। पहला मैंने से पूछा डोनाल्ड ट्रंप, कहता अमेरिकन पिंडी बॉय। अगला मैंने से पूछा कंदील ब्लोच, वो सेंसर्ड है। अगला पूछा गेम ऑफ थ्रोन्स, कहता डेनियरिस। फिर मैंने से पूछा नवाज शरीफ, कहता द गंजा। So I'm gonna impersonate him. So my name is MA. I'm from ITU and I'm doing electrical, and I'm on boarding. But I really don't want to do electrical because I've been forced to. What I want to do is I want to be a businessman. Like even though I'll fail, but I want to tell my kids that I did something what I wanted to do. So that's about the studies. So what he wants to do in life is to travel alone on his bike with a SoundCloud library. And he doesn't like to share his library, he just wants to keep it to himself, and not somewhere scenic, just like he'd go to the slums and just watch people what they want to do and how they do it. And his crush is Sabah Kamar. And Emma Watson. And that's all. Sayan and Akanya. My name is Sanadar and she is Rania Fawcett. सबसे पहले तो इनका नाम बहुत मुश्किल है, 3 दफ़ा मैंने भाई पूछा कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या। दूसरी सबसे अमेजिंग और
मैं एक छोटी सी इक्वेशन पहले लिखना चाहूँगा जो मोहम्मद उमर को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करती है। पहले ये मिटा दें, इम्पोर्टेंट। ये दो नाम हैं, आपको शायद का पता। वेल नोन नाम है। इब्न बतूता एक अरेबियन ट्रैवलर था who was supposed to go on a 14-day trip, लेकिन he spent about 40 months worth of time exploring the Arabian Peninsula, and he is similar to that in a way कि इनको बाइकिंग बहुत पसंद है। ये जहाँ भी जाते हैं अपनी बाइक लेकर जाते हैं। He went to फैसलाबाद I think on a by a bicycle, and he's explored Lahore। और इनकी एक ख्वाहिश है कि अगर ख्वाहिश नहीं है, अगर ये एक महीना रहता हो इनके पास, तो he would want to explore the world with a bicycle, as well as Elon Musk part. He's an inventor. Basically, he created a security system and airplane trip simulation, all that sort of freaky nerdy stuff that he's into. That basically describes him. That's all. नूर से जो मैंने बात की, बेसिकली 20 मिनट्स में से 19 मिनट्स तो मैं अपने बारे में बताता रहा, और 1 मिनट में नूर की जो बातें मुझे पता चली वो ये थी कि लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो माहौल को मॉडेस्ट रखना, उनको कूल करना, इसका काम है नॉर्मल करना, ये हमेशा लड़ाई ख़त्म करवाते हैं, और ये बहुत एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि 1 महीने का मैंने पूछा कि आपको पता चल गया जी आखिरी टाइम है आपका, क्या करोगे? यार तौबा करूँगा, हज उम्रा करूँगा। अच्छा, थर्ड बात ये कि हाँ, इंटरेस्ट मैंने इनसे पूछा इंटरेस्ट किस चीज़ में, और पैशन क्या है। इंटरेस्ट के अंदर इन्होंने बताया कि रोबोटिक्स और गेम्स वगैरह, सिमुलेशन वगैरह, इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। तो पैशन में आ गया तो फिल्म मेकिंग वगैरह जो है, प्रोडक्शन वगैरह, इनमें इनका बहुत ज़्यादा इनके पैशन, मेरा बहुत पैशनेट है उसमें। उसके अलावा और कुछ था My name is Salah Gani। ये हमारे कबीर हैं, ये सांगला से बिलोंग करते हैं। हाइट भी माशाल्लाह सांगला की पहाड़ी जैसी है थोड़ी बहुत। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में काफ़ी पैशनेट है। इन्होंने अभी करंटली इनका 4th सेमेस्टर एंड हुआ, और मेकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है जिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली आर्डुइनो टेक्नोलॉजी है जिस पर ये एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं, जो कि एक बेसिकली कार है जो डिटेक्ट करती है किसी भी कोलिजन को, कोलिजन डिटेक्ट करती है, और कोलिजन होने से पहले और वो गाड़ी रुक जाती है। और ये यूनिवर्सिटी से पहले तक धक्के खाते आए हैं। अबू ने कहा ये कर लो, बट्टे कर लिया, अम्मी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, उधर कर लिया। माशाल्लाह धक्के खाने में काफ़ी एक्सपीरियंस है। जब से यूनिवर्सिटी आए हैं तब से काफ़ी ग्रूमिंग हुई है इनकी, काफ़ी सोबर हुए हैं अपनी क्या कहते हैं फील्ड में। That's all। ये इनका नाम तलहा गिलानी है। ये शुरू से ही सियासत की तरफ इंटरेस्ट था इनका। ये फिलहाल आजकल ये फास से सियासत की डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वेब डेवलपमेंट में इन्हें कीड़ा है। ये 7वीं क्लास में इन्होंने पहला अपना पोर्टफोलियो बनाया था, और ये सॉफ्ट एक्सपो में अपना वेब डेवलपमेंट का एक होस्ट कर चुके हैं कंपटीशन, और फ्यूचर में ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। सलमान है उस्मान।
अलावा मुझे गेम ऑफ थ्रोन बहुत पसंद है, ये बताने की ज़रूरत नहीं क्यों पसंद है। इसके अलावा म्यूज़िक मेरा पैशन है, मुझे कव्वाली बल्कि हर तरह का म्यूज़िक पसंद है। पहले मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स थी, फिर जवाल आया और वो भी कमाल पे आया। इस वक्त मैं बेरोजगार। मेरी फेवरेट मूवी फाइट क्लब है और फेवरेट डायलॉग है से हेरो टू माय लीडर। मुझे नहीं पता अच्छा, मेरा नाम उस्मान है, एक का मुझे नहीं पता क्या है। और मैं एक बड़ा होपलेस रोमांटिक इंसान हूँ। बच्ची फिर भी एक ही रही है, लेकिन ढूंढ रहे हैं दूर दूर से, काफ़ी दूर से। अनअटेनेबल चीज़ें लेने का बड़ा शौक है मुझे, इसलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी बड़ा शौक था मुझे। नहीं जाने दिया घर वालों ने, आ गया फास्ट पर भी मैं भी। और अब बस टाइम गुजार रहा हूँ वहाँ, सिलिकॉन वैली देख रहा होता हूँ, बारिशों में लव सॉन्ग सुन रहा होता हूँ। You know, same old, same old. एम्बर हर्ड का बड़ा फैन हूँ, स्पेशल दिखवाया हुआ है बड़ा सा। ग्लैडिएटर फेवरेट मूवी है मेरी। म्यूजिक का इन भाई को भी बड़ा शौक है और इनका फेवरेट डायलॉग है हाउ यू डूइंग। We have one more pair left. Kasim and his partner, please come on stage. मेरा नाम कासिम है और ये है असफनियाती। जैसे कि पता है कि मेरा अच्छा ग्रुप बन गया बिकॉज आपको पता है फोटोग्राफर है, इसलिए मेरी टीम अच्छी आएंगी। और दूसरी बात कि एक तरह से ये मुझे अच्छा ग्रुप मिला है, ये भाई जो जिनसे मेरा ग्रुप बना है ये बहुत पैशनेट है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। इनको एनसी बनाने का बहुत शौक था, इसकी वजह से अभी तक बहुत जलील हो चुके हैं। खवार मतलब लिटरली मैंने 2 साल ICS किया, ये बैंकिंग इनकी फैमिली है। इनके बड़े भाई को कहा गया वो भी नहीं गए, इनकी बहनों को कहा गया वो भी नहीं गई। उसके बाद आखिरी सरमाया ये खुद थे और इनके फादर ने भरपूर कोशिश की कि ये जा सके, बट चूंकि ये लिटरली आर्टिस्टिक आदमी है, फोटोग्राफर, स्केचिंग, राइटिंग, एनीथिंग, और किसी चीज़ में नहीं हर चीज़ में एक्सेल करने का शौक है। So that's all I'm trying. ये मेरा मुश्तकी भाई है कासिम अली शाह। इनको जनाब आर्मी में जाने का शौक था, जो इनका शौक इनके अब्बू की वजह से पूरा नहीं हो सका, क्योंकि ये अपने अब्बू के सर का ताज थे, उन्होंने नहीं जाने दिया। तो अब इनका इरादा है कि ये भी आमिर लियाकत के अपना शौक पूरा करें। उन्होंने एडमिट किया और मेरे भाई को अभी तक नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है। CS में ये आ गए हैं, 1-1.5 साल गुजार चुके हैं, अब इनका मूड हो रहा है CS पढ़ने का, तो इंशाल्लाह ये कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या थी? हाँ, अच्छा बंदा है और मूडी बंदा है, जो दिल करता है वो करता है और अपने वर्ड्स को पूरा करता है। अगर ना भी करना चाहे और अगर उसने कह दिया तो ये पूरा कर सकता है उसको, और ये पूरा करता है उसको अपने खिलाफ जाके, और इसकी ये आदत, उसकी ये बात बहुत अच्छी है। और उम्मीद करते हैं कि अब इनका CS पूरा हो जाए और लोग देख सकते हैं। काफ़ी कुछ वैसे सीखने को मिला है मुझे 25 लोगों से। सबसे पहले ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, दूसरा पास में डिग्री पूरी नहीं होती, तीसरा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाला। मुझे बिल्कुल लग रहा था कि सारे लोग मरने मनाने की बातें कह रहे हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं किया यार, अभी तो पहला दिन है ट्रेनिंग का। सो बेसिकली अब थोड़ा रियलाइज हुआ होगा कि सही में अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना क्या होता है। उसमें उनका ग्रुप बन गया अपने दोस्तों के साथ ही, लेकिन बाकी में ये चीज़ होती है आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलते हैं। दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट क्लिप जो आप बच्चों से जब आप करेंगे
तो वो कैसे फीलिंग हो, वो आपसे सवाल पूछेंगे, सर नाश्ते में क्या खाते हैं, सर आपकी गर्लफ्रेंड है, सर मेरी तो है। There can be a lot of surprises as well. So it's like that. दूसरी एक चीज कि काफी लोगों ने ह्यूमर यूज किया, that's really good. हम आज से आगे जितनी प्रेजेंटेशंस करेंगे, क्योंकि हम लोग समर कैंप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट? तो आपने दिमाग में ह्यूमर वो रखना है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं क्लास में। थिंक दैट वे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। जब आप वर्चुअली टीमिंग कर रहे होंगे, यू विल हैविंग मीटिंग ऑन स्काइप, वहाँ पे आप नहीं कर सकते, राइट? तो यू हैव टू थिंक लाइक कि आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करें एंड आप उनके साथ क्या ह्यूमर करेंगे। सो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स में दो चीजें होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब हमारे पास दो छोटी छोटी वीडियोस हैं जो कि जिनसे हमने खुद बहुत कुछ सीखा है। दे आर अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आज का लाइक आखिरी चीज़ है। आई विल प्ले देम और उसके बाद प्रॉब्लम वी कैन हैव लाइक डे 1 to 4, राइट? सो दीज आर वीडियोस। और दूसरी एक है कि इफ यू गाइस कैन ब्रिंग नोटबुक्स टू टेक नोट्स, क्योंकि बीच में हफ्ते का गैप आ जाएगा, मैं चाहता नहीं कि जो हमने सीखा हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आता है। So take notes of the videos, they are really good. You guys can take pages यहाँ से It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can stop a war or say, I love you. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? Well, I'd like to suggest there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7, I think, are pretty large. The habits that we can all fall into. First, gossip. Speaking ill of somebody who's not present. Not a nice habit, and we know perfectly well the person gossiping 5 minutes later will be gossiping about us. Second, judging. We know people who are like this in conversation, and it's very hard to listen to somebody if you know that you're being judged and found wanting at the same time. Third, negativity. You can fall into this. My mother in the last years of her life became very, very negative, and it's hard to listen. I remember one day I said to her, it's October the 1st today, and she said, I know, it's a bit dreadful. It's hard to listen when somebody's that negative. And another form of negativity, complaining. Well, this is the national art of the UK. It's our national sport. We complain about the weather, about sport, about politics, about everything. But actually complaining is viral misery. It's not spreading sunshine and lightness in the world. Excuses. We've all met this guy. Maybe we've all been this guy. Some people have a blame thrower. They just pass it on to everybody else and don't take responsibility for their actions. And again, hard to listen to somebody who's being like that. Penultimate, the 6th of the 7, embroidery, exaggeration. It demeans our language, actually, sometimes. For example, if I see something that really is awesome, what do I call it? And then, of course, this exaggeration becomes lying, out and out lying, and we don't want to listen to people we know are lying to us. And finally, dogmatism. The confusion of facts with opinions. When those two things get conflicted, you're listening into the wind. You know, somebody is bombarding you with their opinions as if they were true. It's difficult to listen to that. So here they are, 7 deadly sins of speaking. These are things I think we need to avoid. But is there a positive way to think about this? Yes, there is. I'd like to suggest that there are 4 really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world. Fortunately, these things spell a word. The word is hail, and it has a great definition as well.
I'm not talking about the stuff that falls from the sky and hits you on the head. I'm talking about this definition, to greet or acclaim enthusiastically, which is, I think, how our words will be received if we stand on these four things. So what do they stand for? See if you can guess. The H, honesty, of course. Being true in what you say, being straight and clear. The A is authenticity, just being yourself. A friend of mine described it as standing in your own truth, which I think is a lovely way to put it. The I is integrity, being a word, actually doing what you say, and being somebody people can trust. And the L is love. I don't mean romantic love, but I do mean wishing people well. For two reasons. First of all, I think absolute honesty may not be what we want. I mean, my goodness, you look ugly this morning. Perhaps that's not necessary. Tempered with love, of course, honesty is a great thing. But also, if you're really wishing somebody well, it's very hard to judge them at the same time. I'm not even sure you can do those two things simultaneously. So, hail. Also, now that's what you say, and it's like the old song, it is what you say, it's also the way that you say it. You have an amazing toolbox. This instrument is incredible, and yet this is a toolbox that very few people have ever opened. I'd like to have a little rummage in there with you now. Just pull a few tools out that you might like to take away and play with, which will increase the power of your speaking. Register, for example. Now, falsetto register may not be very useful most of the time, but there's a register in between. Now, I'm not going to get very technical about this for any of you who are voice coaches. You can locate your voice, however. So if I talk up here in my nose, you can hear the difference if I go down here in my throat, which is where most of us speak from most of the time. But if you want weight, you need to go down here to the chest. You hear the difference? We vote for politicians with lower voices. It's true. Because we associate depth with power and with authority. That's register. Then we have timbre. It's the way your voice feels. Again, the research shows that we prefer voices which are rich, smooth, warm, like hot chocolate. But if that's not you, that's not the end of the world, because you can train. Go get a voice coach. And there are amazing things you can do with breathing, with posture, and with exercises to improve the timbre of your voice. Then prosody. I love prosody. This is the sing-song, the meta-language that we use in order to impart meaning. It's route one for meaning in conversation. People who speak all on one note are really quite hard to listen to if they don't have any prosody at all. That's where the word monotonic comes from, or monotonous, monotone. Also, we have repetitive prosody now coming in, where every sentence ends as if it were a question, when it's actually not a question, it's a statement. And if you repeat that one over and over, it's actually restricting your ability to communicate through prosody, which I think is a shame. So let's try and break that habit. Pace. I can get very, very excited by saying something really, really quickly, or I can slow right down to emphasize. And at the end of that, of course, is our old friend, silence. There's nothing wrong with a bit of silence in a talk, is there? We don't have to fill it with ums and ahs. It can be very powerful. Of course, pitch often goes along with pace to indicate arousal, but you can do it just with pitch. Where did you leave my keys? Where did you leave my keys? It's a slightly different meaning in those two deliveries. And finally, volume. I can get really excited by using volume, sorry about that, if I startled anybody. Or I can have you really pay attention by getting very quiet. Some people broadcast the whole time, try not to do that. That's called sodcasting. Imposing your sound on people around you carelessly and inconsiderately, not nice. Of course, where this all comes into play most of all is when you've got something really important to do. It might be standing on a stage like this and giving a talk to people. It might be proposing marriage, asking for a raise, a wedding speech, whatever it is. If it's really important, you owe it to yourself to look at this toolbox and the engine that it's going to work on. And no engine works well without being warmed up. Warm up your voice. Actually, let me show you how to do that. Would you all like to stand up for a moment? I'm going to show you the 6 vocal warm-up exercises that I do before every talk I ever do. Anytime you're going to talk to anybody important, do these. First, arms up.
Deep breath in and sigh out. Like that. One more time. Very good. Now we're going to warm up our lips and we're going to go bop, 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 bop. Very good. And now, just like when you were a kid. Now your lips should be coming alive. We're going to do the tongue next with exaggerated la, 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 la. Beautiful. You're getting really good at this. And then roll an R. That's like champagne for the tongue. Finally, and if I can only do one, the pros call this the siren. It's really good. It starts with we and goes to or. The we is high, the or is low. So you go wee, or, wee, or. Fantastic. Give yourselves a round of applause. Thank you. Next time you speak, do those in advance. Now, let me just put this in context to close. This is a serious point here. This is where we are now, right? We speak not very well into people who simply aren't listening in an environment that's all about noise and bad acoustics. I have talked about that on this stage in different phases. What would the world be like if we were speaking powerfully to people who are listening consciously in environments which were actually fit for purpose? Or to make that a bit larger, what would the world be like if we were creating sound consciously and consuming sound consciously and designing all our environments consciously for sound? That would be a world that does sound beautiful, and one where understanding would be the norm, and that is an idea worth spreading. Thank you. So you might have an idea कि हम कल सुबह स्प्रेडिंग कौन सी करें? नहीं? आपके 10 मिनट जिसने किए वो कल सुबह हम करेंगे इंशाल्लाह. Probably so this is the second video on listening. दोनों videos के end पे try to evaluate while you are presenting here. अपने आप को like खुद evaluate करें कि आप क्या चीज़ implement कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, क्या चीज़ improve कर रहे थे. So this is the second video on listening. The same guy is. We are losing our listening. We spend roughly 60% of our communication time listening, but we're not very good at it. We retain just 25% of what we hear. Now, not you, not this talk, but that is generally true. Let's define listening as making meaning from sound. It's a mental process, and it's a process of extraction. We use some pretty cool techniques to do this. One of them is pattern recognition. So in a cocktail party like this, if I say, David, Sarah, pay attention, some of you just sat up. We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name. Differencing is another technique we use. If I left this pink noise on for more than a couple of minutes, you would literally cease to hear it. We listen to differences, we discount sounds that remain the same. And then there is a whole range of filters. These filters take us from all sound down to what we pay attention to. Most people are entirely unconscious of these filters, but they actually create our reality in a way because they tell us what we're paying attention to right now. I'll give you one example of that. Intention is very important in sound, in listening. When I married my wife, I promised her that I would listen to her every day as if for the first time. Now that's something I fall short of on a daily basis, but it's a great intention to have in a relationship. But that's not all. Sound places us in space and in time. If you close your eyes right now in this room, you're aware of the size of the room from the reverberation and the bouncing of the sound off the surfaces. And you're aware of how many people are around you because of the micro noises you're receiving. And sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it. In fact, I would suggest that our listening is the main way that we experience the flow of time from past to future. So, sonority is time of meaning, a great quote. I said at the beginning, we're losing our listening. Why did I say that? Well, there are a lot of reasons for this. First of all, we invented ways of recording. First writing, then audio recording, and now video recording as well. The premium on accurate and careful listening has simply disappeared. Secondly, the world is now so noisy. With this
this cacophony going on visually and auditorily. It's just hard to listen. It's tiring to listen. Many people take refuge in headphones, but they turn big public spaces like this, shared soundscapes, into millions of tiny little personal sound bubbles. In this scenario, nobody's listening to anybody. We're becoming impatient. We don't want oratory anymore, we want sound bites. And